تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المحسنين وقال سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله एक मरतबा और दुरूशी को नज़र पेश कीजिए सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह. Today inshallah we will continue with our topic which we started yesterday in relation to the rights of one's neighbours, and thereafter inshallah if we have time we will go through some hadith in relation to taking care of the orphans and the excellence and the virtue of those who provide for orphans, those who have been orphaned, and we will explain the definition of an orphan yatim Islamically. Islamically, yatim means someone who is a prepubescent, a child who has not reached the age of puberty and the father passes away, a yatim. So we read in relation to the hadith of the Prophet ﷺ in which he emphasized upon all of us to be good and kind to the yatim, aitam, and the blessings which Allah subhanahu wa ta'ala will give those people who look after and take care of the aitam. And generally in relation to those people who are heartbroken. A yatim is heartbroken. Uska dil toota hua hota hai, क्योंकि उसके बाप का साया उसके सर से उठ चुका होता है. और हदीस शरीफ में है कि अल्लाह की रहमत सबसे ज़्यादा उन लोगों पर होती है कि जिनके दिल टूटे हुए होते हैं. टूटे हुए दिलों के पास अल्लाह की रहमत ज़्यादा होती है. इसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि जब एक सहाबी आपके पास आए और अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दिल की सख्ती महसूस करता हूँ, दिल मेरा बड़ा सख्त है, उसके नरमी नहीं है. The Sahabi came to the Prophet ﷺ complaining that, Ya Rasulullah ﷺ, I have a very coarse heart. I'm cold-hearted. There's no mercy in me. I'm stubborn. You know, see, the Sahabi was, radiallahu ta'ala, they are all cleansed, purified. With one gaze of the Prophet ﷺ, they attain such a level of purity that even if someone was to start mujahada, from the day he was born until he dies, he passes away, he will still not attain that level of purity and that level of closeness to Allah subhanahu wa ta'ala that his sahabi would have got merely by one gaze of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But just on behalf of us, he asked this question, because we feel this sometimes. Hard-heartedness. Yeah? There's no kind of compassion in our hearts. We don't feel for anybody. Okay? So the Prophet ﷺ said two things, one of which was, place your hand on the head of an orphan. Place your hand on the head of an orphan. Inshallah, by doing this, Allah subhanahu wa ta'ala will cast mercy into your heart. पहली बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई, सख्त दिली को, दिल के सख्त होने का इलाज और किस तरीके से दिल को नरम किया जाए, वो इस तरह के यतीम के हाथ पर, यतीम के सर पर हाथ फेरा जाए. और बाद में कुछ रिवायतें आएगी इस्लामी अखलाक व आदाब यानी बहार शर का 16 हिस्सा, उसमें हुज़ूर सदर शेख रहमतुल्लाह हदीस नक़ल फरमाते हैं कि अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, यानी वो यतीम हो, तो पीछे से आगे की तरफ लाए, और अगर वालिद साहब हो और वालिदा का इंतकाल हो जाए तो आगे से पीछे की तरफ लाए. एक हिकमत है, हदीस शरीफ में बयान की गई है. अल्लाह बेहतर जानते उसके पीछे क्या हिकमत है. यकीन कुछ न कुछ हिकमत होगी. And the second thing which the Prophet ﷺ said was, feed the poor. By feeding the poor, Allah subhanahu wa ta'ala will cast mercy into your heart. There are some people, mashallah, in society, they have a very soft heart. And they take care of, they are very
affectionate, compassionate. They are overwhelmed with emotions. When you talk about what is happening in Burma, what is happening in Syria, they can't bear to hear it. They have a very soft heart. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu was such people who was raqiqul qalb, who had a very, very soft heart, to the extent that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in the illness prior to his physical departure from this world, when he instructed Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha, Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas, Abu Bakr को हुक्म दीजिए वो मेरे मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर के लोगों की इमामत करे, नमाज पढ़ाए मेरे मुसल्ले पर. तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये बात कही कि वो बहुत ही रकीकुल क़ल्ब है, उनका दिल बहुत ही नरम है. यानी खौफ खुदा की वजह से ये आलम है कि वो नमाज पूरी नहीं कर पाएंगे, खूब उसमें रोएंगे. ये आलम था उनका. हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी जलालत शान के बावजूद, आपके जलाल और आपकी कमाल के बावजूद इतने रकीकुल क़ल्ब होते थे कि जब किसी आयत को सुनते थे जिसमें अल्लाह ताला के अज़ाब का जिक्र हुआ करता था तो कई दिनों तक बेहोश हो जाते थे, और लोग आपके जैसे आपको इस तरह ले जाते थे जैसे जनाजे को घर की तरफ ले जाया करता है, और लोग आपकी इस तरह इयादत करते जैसे कि कोई शख्स किसी के यहाँ मैयत हुई हो तो उनकी यहाँ ताज़ियत पेश करने के लिए जाते, इस तरह लोग उनकी ताज़ियत पेश करने के, उनकी याद के तशरीफ़ ले जाया करते थे. So this is and Imam Abdul Wahab Sha'rani rahmatullah alayhi quotes his teacher Imam Ali Khawwas rahmatullah alayhi that a qutub, who's a qutub, qaf ta'an ba, qa taf ba, which means the cardinal pole of all saints. Yani a station after the station of Ghawthiyya is Qutbiyya. And there are, in every era, there are approximately 4 aqtab in every era, in every society. Even now, there are 4 aqtab, through whom Allah subhanahu wa ta'ala showers rain on the people, through whom Allah subhanahu wa ta'ala alleviates calamities from people, through whose intercession Allah subhanahu wa ta'ala accepts the du'as of people. They are always 4. The awliya are many, but there are different ranking awliya. Amongst them there's a level known as Qutbiyya. Imam Ali Al-Khawwas rahimahullah mentions, and Imam Sha'rani rahmatullah alayhi cites this in Lata'if al-Minan, في وجوب التحدث بأخلاق الله والمنن. He mentions that one of the signs of a qutub is that he will have a very, very soft heart. Soft heart. You know, some people, we pray namaz, right? Yes, we all pray namaz. But there are some moments where, I've seen it with some people, mashallah, whenever they hear a speech and they hear an incident about the khawf of Allah subhanahu wa ta'ala, or an anecdote in relation to the Salaf al-Salihin, in relation to their fear and their khawf in relation to Allah subhanahu wa ta'ala and the akhirah, they start shedding tears. With most of us, we don't. There's no shaking of the heart, there's no trembling of the heart. Whereas Allah subhanahu wa ta'ala asks us a rhetorical question. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ. Hasn't the time come yet for you, O believers? क्या ये वक्त नहीं आया आपके लिए कि आपका दिल अल्लाह ताला के खौफ की वजह से पिघल जाए और अल्लाह ताला की खौफ की वजह से दहलने लगे? क्या ये वक्त नहीं आया? Hasn't the time come yet that your hearts tremble out of the fear of Allah and whatever Allah has revealed in the Quran? And the greatest way in order to have this, to inculcate this soft heartedness into nature in our hearts, in ourselves, is to actually understand what you are praying in namaz. Understand the meanings of Surah Al-Fatiha. When you say Maliki Yawmiddin, what should you have in your mind? You are in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. When you say Maliki Yawmiddin, what do you think? What should you think? What should your frame of mind be? Here we pray Surah Al-Fatiha every rakat, every single day, but it doesn't have any effect upon us. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, we say at the beginning of every rakat. But do we really mean it? Do we really express gratitude from the depths of our hearts? So we need to understand this. Inshallah, later on I'm going to explain that. That was actually an introduction. I've already spent 10 minutes in that. Nonetheless, I'm going to, inshallah, read a few ahadith for barakah, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
The 67th chapter, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شات. पड़ोसन के किसी हदिये को हकीर न जानो. A woman should not disdain or belittle or look down upon any gift that her neighbor gives her. Or whoever gives you a gift, even if someone gives you a pen, accept it and thank them. Okay? Don't say, this is a very cheap or nasty pen. You could have brought me something better. Accept it. This is a sunnah of the Prophet ﷺ to give gifts and to accept gifts, but do not disdain, look down in contempt or belittle any gift that a person gives you. To the extent it says here, यहाँ तक हदीस में फरमाया गया कि अगर कोई पड़ोसन बकरी का जला हुआ एक दस्त या एक खुर, जिसको हम पाया कहते हैं, trotters, एक हिस्सा, एक पीस उसका दे, तो फिर भी उसको हकारत की निगाह से न देखे, कबूल करे और ये सोचे कि कम से कम इनके अंदर इतनी इस्तिदाद थी, उन्होंने मुझे ये हदिया पेश किया, उसको कबूल करे, सिद्क़ दिल के साथ उनके दिल को खुश करे. जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला को जज़ाए खैर अता फरमाए, आपने ये हदिया मुझे भेजा और आप उससे अच्छा उनको हदिया वापस भेजें. क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, तहादू तहाबू. Exchange gifts, it will increase mutual love. It doesn't have to be expensive items. Whatever food you've made, let your neighbors partake from that food. Share it out. Give it to other people. Give it to friends and family. And especially, this is the bonus point. The bonus points you're going to receive in this bonus month. Why? Because if you provided for iftar, if you provided the means by which someone can break his food, you will get their reward as well. They will get their full reward, plus you will get the accumulated reward for the person who fasted. Okay. It doesn't have to be lamb chops, steak. MashaAllah. I heard someone have a watery mouth, MashaAllah. You've still got many hours left, inshallah. Sabr, inshallah. This is the month of sabr. Shahrul sabr. Wa sabr thawabu al-jannah. And the sabr, the reward of sabr is Jannah. Subhanallah. MashaAllah, you've all, subhanallah, enjoyed, alhamdulillah, with much patience the month of Ramadan, the heat of the pet, the hunger, pangs of hunger, for about 22 days. You've only got, inshallah, 8 more left, inshallah. Allah make us all go to the maximum, inshallah, now. These are the last 10 days for you to, the last 10 meters of a race. This is it. Exert as much effort as you can. Do as much as you can. These are the remaining days of Ramadan in which you can maximize the potential of what you can take. Whatever you take here, inshallah, I guarantee for you, you will gain its barakah, you will reap its barakah and benefit all throughout the 11 months thereafter, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمر بن معاذ الأشهلي عن جدته رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. सैयदना अमर इब्न मुआज़ अल-अशहली अपनी दादी से रिवायत फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि मुझको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए ईमान वाली औरतों, तुम में से कोई औरत हरगिज़ अपनी हमसाया औरत के हदिये को हकीर न जाने, हकारत की निगाह से न देखे कि ये क्या भेज दिया उसने. फिर गीबतें करते हैं कि उसके पास और कोई चीज़ नहीं थी, मुझे ये भेज दी, बड़ीली रोटली मुगली दी, for example. And we try and find faults. At least they've given you a gift. You weren't bothered to even, give them a loaf of bread. Okay? The Prophet ﷺ said, अगरचे बकरी का जला हुआ एक दस्त ही हो, फिर भी उसको हकारत की निगाह से नहीं देखो, उसको कुशादगी दिल के साथ कबूल करो, उसको खुश करो. कम से कम उसको तो तौफीक मिले कि आपको हदिया भेजे. आपको कहाँ तौफीक मिलती है? आपसे मुराद जनरली स्पीकिंग, दिस इज फॉर एवरीवन. Okay?
इसी से मिलती जुलती एक और हदीस शरीफ बयान फरमाते, हद्दथना आदम क़ाल हद्दथना इब्न अबी ज़ि'ब क़ाल हद्दथना सईद अल-मक़बूरी अन अबीही अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम अजमईन क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या निसा अल-मुस्लिमात या निसा अल-मुस्लिमात ला तहक़िरन्न जारतुन लिजारतिहा वलौ फ़िरिस्ना औ फ़िरिस्न शातिन। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुसलमान औरतों, हरगिज़ हक़ीर न जाने कोई औरत अपने हमसाया औरत के हदिये को, अगरचे हदिया बकरी का खुर ही क्यों ना हो। यानी मसलन वो जो आप लोग बनाते हैं घर पे पाया, और उस पाए के जो सालन है उसके अंदर एक पाया रखा हुआ है, तो आप कहते देखो सारा खा गई और बस एक पाया रखे मुझे दे दिया, तो ये सब ऐसी की ग़ीबत भी है और ये हक़ारत की निगाह से हदी को देखना है, जिसकी मुमानत खुद हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कुछ भी दे कबूल कर ले फ़राख़ दिल के साथ, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाएगा और आपके कबूल करने की वजह से आपको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाएगा। Even if they gave you one trotter, do you call it trotter? Trotters, but we're talking about one trotter here, burnt one. So even if someone gives you a burnt trotter, accept it. Okay? Inshallah. And that you give them in exchange something better, or at least something which is equal to that. Not burnt one obviously, but something inshallah that's better. Nonetheless, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Babu shikayatil jar, a neighbor's complaint. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ने जो एक हीला पेश फरमाया कि अगर किसी का पड़ोसी उसको तकलीफ देता तो क्या करना चाहिए। 124th hadith, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. सुभान। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक पड़ोसी है, मुझे सख्त तकलीफ़ पहुँचाया करता है, मुझे सख्त अज़ियतें पहुँचाता है, सख्त तकलीफ़ देता है, उसका क्या इलाज हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अपने घर पे जा और जो घर का सामान जो है ना वो रास्ते में निकाल के रख दो, जो थैलिया है या जो कुछ भी है, अगर आपके घर में सोफ़ा हो तो सोफ़ा बाहर रख दो। अल्लाह अकबर। ये देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत देखें। फ़ंतलक़ फ़अख़रज मताअहु, तो वो शख्स चला गया और जो घर का सामान था, जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी, वो बाहर उसने रख दी। फ़ज्तमअ अन्नासु अलैहि, लोग इकट्ठा हो गए। What did the Prophet ﷺ, the solution which the Prophet ﷺ gave to a person who came with a complaint was, go back to your house and take your the household things out of your house and take it out onto the road. Put it outside in front of your house. So he went and he did that. فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ, the people gathered around, assembled around him. فَقَالُوا مَا شَأْنُكَ, what has happened to you? क्या हो गया आपको? قَالَ لِي جَارٌ يُؤْذِينِي, कहा मेरा एक पड़ोसी है जो मुझे सख्त तकलीफ पहुंचाता है। तो मैंने इसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में किया। فَذَكَرْتُ ذَلِكَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق, तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये पड़ोसी मुझे तकलीफ पहुंचाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तजवीज़ पेश फरमाई कि तू अपने घर का सामान बाहर रख दे। तो ये लोग सहाबी थे। फ़जालू यक़ूलून अल्लाहुम्मा लअनहु अल्लाहुम्मा अख़ज़िही, अल्लाहु अकबर। तो लोग उस पड़ोसी पर लानत करने लगे, कैसा ज़लील, नाकारा, बदतमीज़ और बेतहज़ीब वाला पड़ोसी है कि उसके पड़ोसी को इतनी तकलीफ पहुँचाए तो उसे अपना सामान बाहर निकालना पड़ा। अल्लाह उसे ज़लील कर, ये कर, वो कर। फ़बलग़हु फ़अताहु, तो ये जो बातें वो कर रहे थे, ये आवाज़ पड़ोसी की जो तकलीफ पहुँचा करता था, ये आवाज़ उसके कानों तक पहुँची कि लोग मुझे लानत कर, लोग मुझे ऐसा ऐसा कह रहे। तो वो बाहर गया। फ़अताहु, तो जिस पड़ोसी वो तकलीफ दिया करता उसके पास गया, कहा इरजि इला मंज़िलिक फ़वल्लाहि ला उज़ीक, सुभान अल्लाह, रिटर्न बैक टू योर हाउस, इंशाल्लाह आफ्टर दिस आई वोंट अफ्लिक्ट एनी पेन अपॉन यू। चले जा अपने घर वापस, मैं इंशाल्लाह आज के बाद कोई तकलीफ, कोई भी आपको परेशानी नहीं पहुंचाऊंगा, घर वापस चला जा।
सुभान, ये बहुत ही अच्छी तजवीज़ पेश फरमाई। इसी तरीके से मिलती जुलती एक हदीस शरीफ, हदथना अली इब्न हकीम अल-औदी क़ाल हदथना शरीक अन अबी उमर अन अबी जुहैफह क़ाल शका रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारहु फ़क़ाल इहमिल मताअक फ़दअहु अला त्तरीक़ फ़मन मर्र बिही यलअनुहु। हज़रत अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने पड़ोसी की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपना सामान उठाओ और रास्ते में डाल दो। अब जो शख्स वहाँ से गुजरेगा उस शख्स पर लानत करेगा। फ़जअल कुल्लु मन मर्र बिही यलअनुहु, जो शख्स वहाँ से गुजरता है, every person, every passerby would look at the person with his things, with his household items right in the pathway. And then they would inquire why this has happened, and he would say, because my neighbor, he's an unscrupulous neighbor, he's caused a lot of grief to me, caused a lot of pain. Okay, so that's why I've just had no last resort. The last resort, I just put all the things outside. So the people began to curse him. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم. फिर वो शख्स जिस पर लोग लानत करते थे, यानी वो पड़ोसी जो तकलीफ पहुंचाया करता, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया और कहा, या रसूल अल्लाह, लोग मुझे लानत करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बिलाशुबा खुदा की लानत इंसानों की लानत करने से ज्यादा है। यानी तू जो तकलीफ पहुंचाता है उसकी वजह से हो सकता है अल्लाह ताला तुझे अपनी रहमत से दूर कर दे। लोग तो जो कहे वो कहे, लेकिन खुद अल्लाह ताला अपनी रहमत से तुझे दूर कर दे, ये उनकी लानतों से भी बढ़कर के ज़्यादा तकलीफ दे बात है। तो फ़क़ाल थुम्म क़ाल अल्लज़ी शका कुफ़ीता औ कफ़ैता औ नहव। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शिकायत लेकर के आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपने उस शख्स से इरशाद फरमाया, तेरे हमसाए यानी पड़ोसी के समझाने के लिए ये काफ़ी हो गया, ये बात आपके लिए काफ़ी है। इससे मिलते जुलते आपने अल्फाज इरशाद फरमाए। Okay, another hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن ابن مغراء قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر أو مبشر قال سمعت جابر يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعديه على جاره فبينه هو قاعد بين الركن والمقام إذا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وراءه رجل وهو مقابل رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز. हज़रत फ़ضल इब्न मुबश्शर या मुबश्शिर ने बयान फरमाया कि मैंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ जो अपने पड़ोसी की ज़्यादतियों की शिकायत लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया था। खुदा करे कि कोई भी शख्स, कोई भी हमारा पड़ोसी हमारी शिकायत लेकर के किसी के पास ना जाए, हम ऐसे पड़ोसी हो इंशाअल्लाह। Even though you have non-Muslims next to you, you should set the best example. The example of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, many examples. Neighbors of the Prophet sallallahu alaihi wasallam who were Jews, who were kuffar, and they used to lay thorns in his path. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam never once complained. Rather, in relation to that old woman who used to do that, when she became ill, when she fell ill, the Prophet sallallahu alaihi wasallam himself visited her. He sallallahu alaihi wasallam went to visit her. And when she, subhanallah, inquired, why did you come whereas I have enmity in my heart? He said, at the end, Allah subhanahu wa ta'ala has sent me as a mercy to the entire mankind, to the entire world. I've been sent as an embodiment of mercy. This was the turning point in her life, and she embraced Islam. The old woman, subhanallah, who was finding it difficult to carry her bags. And the Prophet ﷺ said, I will carry it for you. And the Prophet ﷺ accompanied that old woman until her house. And then the old woman turned to the Prophet ﷺ. She didn't recognize the Prophet ﷺ. And Allahu Akbar. She said, I cannot repay you for anything, for the favor that you've just done to me. But the only thing that I can tell you, and the advice I can give you is, there is a person in the vicinity, in the city of Mecca, who claims himself to be a prophet. His name is Muhammad son of Abdullah. Don't follow him. Allahu Akbar. Don't follow him. Don't obey him. Don't listen to him. Don't sit in his gatherings. He has sorcery. He has witchcraft and magic. Don't sit with him. The Prophet ﷺ smiled and said to the old lady, do you know who I am? I am that very Muhammad ﷺ. At that very point, she embraced Islam.
Akhlaq. On the conquest of Makkah, when the Prophet ﷺ went with 10,000 of his noble companions, and on the way towards Makkah to Mukarramah, it was a day of retaliation. Yes, yani you can imagine someone being driven out, being forced to leave their houses, being brutally tortured, their parents and their brothers being beaten up in front of them, even killed and martyred in front of them because they proclaimed the kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. And now they march back into that city, but not as being those who are being oppressed, but now as being having the upper hand. Having the upper hand with authority. The Prophet ﷺ went. Do you know the state in which the Prophet ﷺ went? He could have gone with the full pomp and show. The Prophet ﷺ, as he neared Makkah al-Mukarramah, he lowered his blessed head until it was seemed as though he was performing sujood on the blessed camel's back. And then on the way, the Prophet ﷺ heard someone say, "Al-yawma yawmul malhama." Today is a day of shedding blood. These are the very people, the kuffar of Quraysh, who drove us out of our houses, who forced us to leave this blessed city, al-Qura, who, took our brothers and sisters, laid them on the scorching heat of the sun and dragged them, humiliated them. Today, inshallah, we will retaliate, seek revenge. The Prophet ﷺ heard this and took the blessed flag from him, the banner from him, gave it to his son. And then the Prophet ﷺ said, Al-Yawma, today is not Yawmul Malhama, rather today is Yawmul Marhama with a Ra. Today is a day to show mercy. Today is a day of forgiveness. Today is a day of emancipating these people from the hellfire by making them convert to Islam. The Prophet ﷺ said, he announced, in the midst of all those people of the kuffar of Quraysh, whom he could have slaughtered, whom he could have killed, in retaliation of the blood of the Muslims that was spilt and shed in Makkah al-Mukarramah. The Prophet ﷺ said, أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوانه لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. There is no reproach on you today. Go, you are all set free. Do you know what happened? 90% of those people who were kuffar at that time, on that very day they embraced Islam. They all became the Sahaba of the Prophet ﷺ. So this is the akhlaq, good characters. If there is a sword by which Islam spread, it is the sword of noble, moral, ethical character, moral values. Nonetheless, so a person came to the Prophet ﷺ with a complaint of the injustices of his neighbor. अपने पड़ोसी की ज़्यादतियों की शिकायत कर रहा था. वो शख्स रुकन और मकाम के दरमियान बैठा हुआ था. रुकन से मुराद रुकन अस्वद, यानी जहाँ पे हजर अस्वद रखा हुआ है. सुभान अल्लाह. और मकाम से मुराद मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जहाँ पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर के ऊपर खड़े होकर के आपने काबा शरीफ की इमारत को कायम फरमाई, वह यरफ़अ इब्राहिम अल-क़वाइद मिन बैत इस्माइल, वो पत्थर मुबारक शरीफ वहाँ पे रखा हुआ है, जिसका नाम अब है मकाम इब्राहिम, जिसका जिक्र खुद कुरान अज़ीम में है. वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, यानी मकाम इब्राहिम के पास जाकर के नमाज अदा करो. कितनी अज़मत है इस पत्थर की. किस पत्थर की? जिसकी निस्बत एक नबी से हो गई, अल्लाह के खलील से हो गई. तो जिन अशिया की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए, उसका मकाम कितना बुलंद व बाला होगा. सुभान अल्लाह. Nonetheless, إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم, तो वो शख्स वहाँ पे था, मकाम इब्राहिम अलैहि सलाम और रुकन अस्वद. He was in that space between the station of Ibrahim alayhi salam and the corner where the Aswad, Hajar Aswad has been placed. Where the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam coming. ورآه الرجل وهو مقاوم رجل عليه ثياب بياض أو بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز. और उस शख्स ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे आदमी के बराबर मकाम के करीब तशरीफ फरमा है जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए है. वो शख्स जो शिकायत लेकर के गया, उसने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे शख्स से गुफ्तगू फरमा रहे हैं जिसके कपड़े निहायत ही सफ़ेद है, साफ़ व शफ़ाफ़ है, जिसको वो खुद पहचानता नहीं था, क्योंकि ये इंसान नहीं थे, ये कोई और मखलूक थे अल्लाह ताला की. जहाँ पे लोग जनाज़ों की नमाज़ें पढ़ा करते हैं.
فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بياض. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who was that person who was right in front of you, who you were conversating with, who had beautiful white clothing? There was not even a speck of dirt on his clothing. Who was that person? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, أَقَدْ رَأَيْتَهُ? Did you see him? قال نعم. He said yes. قال رأيت خيرا كثيرا. You have seen a lot of good. Did you see this person? क्या तूने उस शख्स को देखा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, क्या तूने उस सफ़ेद पोश, सफ़ेद लिबास में शख्स को देखा? उसने कहा जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाया, तूने बहुत खैर कसीर को देखा, तूने बहुत भलाई को देखा है। क्यों? ذاك जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल रब्बी मा ज़ाल यूसीनी बिलजार हत्ता ज़ननतु अन्नहु जाइल लहु मीरासन। वो शख्स कौन था? वो और कोई नहीं, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। सुभान अल्लाह। जो मेरे रब के भेजे हुए रसूल हैं, यानी फरिश्ते हैं, पैगाम लाने वाले, मुझे हमसाय यानी पड़ोसी के बारे में बार बार ताकीद कर रहे थे, यहाँ तक कि मैंने गुमान किया कि शायद वो पड़ोसी को भी मीरास में हिस्सा दिलवाने वाले हैं, यानी वारिस हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। You came with a complaint, and Sayyidina Jibreel alayhi salam came down and he emphasized to me the importance of being good with the neighbors. He kept on emphasizing the importance and the significance of being good with one's neighbors until I thought that Sayyidina Jibreel alayhi salam would bring down a revelation from Allah subhanahu wa ta'ala that now these neighbors will become the inheritors of people's wealth. If a neighbor dies, then the neighbors, their next door neighbors, will also partake from the inheritance that is left behind. This is the level, this is the significance of being good with our neighbors. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the tawfiq to learn the sacred knowledge and to fulfill the rights which are binding upon us. Ameen. Ya Rabbal Alameen.